Let us now observe cells from our own body. उसके लिए आपको एक आइसक्रीम स्पून लेना है and then gently scrape the inside surface of the cheek. After scraping the inside surface of the cheek with an ice cream spoon, transfer the material onto a glass slide. Put some drops of methylene blue solution on it to give the color to the material. Now place a cover slip. Now observe your cheek cells under the microscope. What is the shape of the cells of your cheek? Yes, as you can see here, they are flat and irregular in shape. तो क्या सारे humans में cheek cell का same size है? No, they may vary in size. But cheek cells are generally larger than other types of cells. और ये जो सेल के बीच में एक डार्क कलर का स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? यस, दिस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. मीन्स दिस इज न्यूक्लियस. Each cheek cell contains a darkly colored spherical or oval shaped structure near the center. This structure is called the nucleus. The nucleus plays a vital role in controlling cellular activities and contains genetic material. तो cheek cell का जो structure है, क्या वो onion peel cells की structure से similar है? No. Onion peel cells are rectangular or square in shape. They have well-defined cell walls. जबकि cheek cell में तो cell wall ही नहीं होगी, because it is an animal cell. It is not a plant cell. सेल वॉल तो प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है. अनियन सेल्स आर अरेंज्ड इन अ सिंगल लेयर, मेकिंग इट इजियर टू ऑब्जर्व इंडिविजुअल सेल्स. बट दोनों सेल का न्यूक्लियस सेम है. अनियन पील सेल्स ऑल्सो कंटेन न्यूक्लियाई and cheek cells also contain nucleus. But the position and visibility of the nucleus may vary in onion cells compared to the cheek cells.